So this is about paper 4, which is training methods experiential. And very interesting question Mr. Deshpande has put up here. And he has asked that simulation training, albeit having an immense impact on trainees in multiple ways, is not widely used by most of the business organizations. ये बात fact है. So ऐसा क्यों होता है? जब हमको मालूम है कि सिमुलेशन से सबसे बेस्ट आउटकम निकल के आता है और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल है. तो आपको इसको जस्टिफाई करना है कि क्यों नहीं करते हैं विद रीजनेबल आंसर्स. तो आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं क्या? बिफोर आई शेयर एनीथिंग, आई वुड लाइक टू यू टू ब्रेनस्टॉर्म अ लिटिल बिट. क्या वजह हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशंस सिमुलेशंस, रियल टाइम सिमुलेशंस या रोल प्लेस जैसा, वर्कशॉप जैसा चीज ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं या उससे कतराते हैं? क्या रीजन हो सकता है? It will consume more sources. First is. Second, no one can create the ideal situation. No one is able to create the ideal situation. That is not possible. Right. Because Right. it is time consuming also. Right. Right. Resource, time, and ideal situation. There are three factors. ठीक है. Yes, I think because usually in trainings we are hard pressed with the schedule and we just want to run through the design schedule, right? Correct. So we avoid simulations, role plays, more and more discussion, group activity. So due to lack of time, or probably because it requires a lot of resource, these are the two reasons which has come up from your responses. Thank you very much, Sarika and Jugal. Was it Jugal who shared that? Yeah, thank you. Any other responses, please? Think. Why? Sandeep, Sanjay, you've been into training. No, most of the time, Kushal, I think it's time, lack of time. People don't Lack have of time. that Okay. much of time to get conducted So everything at a time. Correct. So here we discussed just two. Through this session, I would like to share somewhere around 7-8 reasons for you. You may want to write it down, jot it down, and I'll share those reasons. We'll give a justification to it. We will have reasons. Yeah. One more point, I would like to highlight. That is if you create the ideal situation in that demo, so it will going to inculcate in the minds of that participant. So if there is something change in the environment, then he is not able to respond according to that. Okay, could be, yes. So I'm going to give you 8 reasons. You can jot it down and you may elaborate. You can add more points or reduce it. It's up to you. We'll talk about the valid reason also. Okay. So yes, indeed. First of all, let's accept the fact that simulation trainings is powerful learning method, right? And it replicates the real world scenarios to train the individuals in a safe and controlled environment. आप फील्ड पे जाके ऑन द जॉब ट्रेनिंग करके जो इम्पैक्ट लाओगे, तो उससे हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो या सिचुएशन रियल कस्टमर्स के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते. तो आप क्या करते हो? क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर वही चीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स अ मैक्सिमम इम्पैक्ट, एंड उससे ज्यादा इट्स अ सेफ एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. Now, while it offers numerous benefits, it is not widely used. And we have our reasons for it. So we'll share those justifications. Sabse pehla hai, number one is cost constraints, right? Because developing and implementing simulation training can be really expensive. It requires investments in software, hardware, content development, and sometimes dedicated physical spaces also. आपको बाकायदा ट्रेनिंग रूम बनाना पड़ेगा, आपको हो सकता है सिस्टम इंस्टॉल करना पड़े. तो आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अकेडमीज बनाते हैं, एक जगह एक सेंटर बनाते हैं. जैसे कि आप वर्क विद लाइक कंपनीज लाइक फोर्ड, कंपनीज लाइक Hyundai, Kia, उनका रेनो,
दे डेडिकेटेडली एक ट्रेनिंग रूम बनाते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम बनाते हैं, एंड सिंस पीपल हैव टू बी ट्रेन्ड ऑन मशीन्स, तो बाकायदा एक वर्कशॉप जैसा सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहां पे मशीन्स रखी जाती है, इंजन और अलग अलग पार्ट्स रखे जाते हैं, सो दैट दे गेट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। तो इसको पूरा को सेटअप करना एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। इनफैक्ट इट कैन कॉस्ट यू अप टू crores, many crores, and that's why people avoid. ठीक, clear है? So you can think of other examples as well, other industries also. So the reason is why this is not done is because number one, budgetary constraint hota hai. It may lead to organization to opt for more cost effective training methods. क्या कोई और cost effective method हो सकता है? The initial setup costs and ongoing maintenance expenses can deter smaller companies. तो अगर कंपनी छोटी है और वो इस तरह का सेटअप में इन्वेस्ट कर भी देते हैं, तो उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। डू यू ऑल अग्री? आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं इस चीज को आप? या है ना? यस यस इमेजिन करिए, इसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नर्सिंग कॉलेजेस आपने देखा होगा, नर्सिंग कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस में सिमुलेटेड एनवायरनमेंट किया जाता है, तो वहां पे डमी रखा जाता है पेशेंट्स का, बाकायदा बेड्स बने होते हैं, डमीज होते हैं, बहुत सारा इक्विपमेंट होता है, मेडिकल इक्विपमेंट होता है जिसके ऊपर उनको, एंड दिस कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। एंड इफ द कंपनी इज स्मॉल, ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल, दे माइट वांट टू गेट अवे विद इट, बट कहीं कहीं पे अवॉइड नहीं किया जा सकता। सो दिस इज वन रीजन। सेकेंड इज लैक ऑफ एक्सपर्टीज। इसमें जस्टिफिकेशन क्या है? Building effective simulation requires expertise in instructional design, software development. For example, आप एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, एप्स बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, इमेजिन करिए। अब उस ऐप को यूज कैसे करना है या करवाना है, तो उस ऐप के लिए कोई, अगर आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में उसको यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारा डेटा जाता है, यूसेज डेटा जाता है। सपोज एक सेल्स ऐप है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेल्स ऐप है जहां पे आप कस्टमर डेटा इनपुट करते हैं, कितनी इंक्वायरी आई, कितना डेमो किया, क्या किया। अब रियल टाइम जो ऐप है उसमें अगर मैं ये सारा डेटा डालूंगा तो अननेसेसरली मेरा डेटा में इन नंबर ऑफ इंक्वायरीज बढ़ेंगी, जिसकी वजह से क्या है, जब मैं डैशबोर्ड क्रिएट करूंगा एनालिसिस गड़बड़ाएगा, क्योंकि वो रियल कस्टमर्स नहीं थे, मैंने ट्रेनिंग में उसको फॉल्स डेटा इनपुट किया था। तो उसको करने के लिए क्या, मैं एक पैरेलल यूनिवर्स में एक और टेस्ट एनवायरनमेंट या सिमुलेटेड ऐप बनाता हूं, उसी से मिलता जुलता हूबहू, सो दैट लोग उस पर प्रैक्टिस कर सके। एंड दैट वुड कॉस्ट मनी, दैट वुड कॉस्ट, मतलब वो दैट विल रिक्वायर एक्सपर्टीज। आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा पूरा, फिर से आपको पूरा आईडी, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्रिएट करना पड़ेगा कि ऐप को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है। प्रॉबेबली आपको वीडियोस क्रिएट करना पड़े, बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेस क्रिएट करना पड़े। यस और नो? एंड दैट्स व्हाई organizations also shy away because of lack of expertise. So many organizations lack in-house expertise to create high quality simulations. And outsourcing simulation development can be really costly and may not always align with organizational needs. And that's why this. So second tha, lack of expertise. Let's talk about the third reason. What is the third reason? Time incentive. आप नहीं बोला जिस तरह से टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्रिएटिंग अ रियलिस्टिक एंड इफेक्टिव सिमुलेशन इज एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग। आपको रियल लाइफ सिनेरियोस के बारे में सोचना, उसको एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में ढालना, या उसको थॉरली स्टडी करके केस स्टडी बनाना, इट्स चैलेंजिंग, टाइम कंज्यूमिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन में प्रायोरिटाइज कि भाई यार नहीं, इतना टाइम नहीं है अभी हमको, अगले महीने, अभी आज 25 तारीख है, अगले महीने हमको इंप्लीमेंट करना है, तो इतना टाइम नहीं है अपने को, तो उसको फटाफट करना है। सो यू डोंट हैव टाइम। So the organization may prioritize faster training solutions to meet immediate needs. Decision makers may not fully understand the long-term benefits of simulation training. कई बार क्या होता है, एज अ ट्रेनर
ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से, आप जिस तरह से विजुअलाइज कर रहे होते हैं HR पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको लॉन्ग टर्म विजुअलाइजेशन करते हैं कि यार अगर आज मैं इसको सेटअप कर दूंगा ना, भले टाइम कंज्यूमिंग है, भले बहुत खर्चा है, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक जैसा विजन नहीं रख सकते, और आप ये भी देखिए कि आप डिसीजन मेकर नहीं हो, है ना। आप सिर्फ सजेस्ट कर सकते हो, आइडिया दे सकते हो प्रोजेक्ट का, उसको उसमें जो खर्चा है वो करना है या नहीं करना है वो तो लीडरशिप डिसाइड करेगी ना। बॉस देगा अप्रूवल या MD देगा अप्रूवल। तो यहाँ पे ये चैलेंज हो जाता है। यू गॉट इट? एनी क्वेश्चंस गाइस? यहां तक 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया। आर यू ऑल विद मी? Perfect, perfect. Yeah, it's clear. Yes, yes, yes. Everything is clear so far. Yes. चौथा है रेजिस्टेंस टू चेंज। नाउ समटाइम्स एम्प्लॉयर लीडरशिप में रेजिस्ट अडॉप्टिंग न्यू ट्रेनिंग मेथड्स। कह रहे यार नहीं 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 नहीं, हम लोग तो अपना ना ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही चलता आया है, तो ऐसा ही कर दो, अब ज्यादा इसमें या तुम पंगे ना लो। बिकॉज वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। हम नया कुछ ट्राई नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। टाइम नहीं है, क्या पता फेल हो जाए, क्या पता बहुत खर्चा हो जाए, इफेक्टिव नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो इस डर से जो है ना, लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं। सो sometimes resistance to change is a big reason. A culture aversion to change can hinder the adoption of innovative training methods. For example, once I tried in a previous organization that we implement virtual reality tools or AR tools to demonstrate our products in some organization. मैंने एक्सटर्नल पार्टी को, वेंडर को बुला भी लिया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट ने डेमो भी देख लिया, कॉस्टिंग वॉस्टिंग की भी बात हो गई, लेकिन बाद में उनके दिमाग में पता नहीं क्या है कि यार पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, नहीं ठीक है जैसा चल रहा है उसको चलने दो, उसको मना कर दिया। सो समटाइम्स इट डज हैपन। एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग मेथड्स मे बी डीपली इनग्रेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, और वो चेंज नहीं होना चाहते। आपके साथ भी ये चैलेंज आया होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर where you have tried to bring something new and organization ने बोला नहीं यार ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। हुआ है कभी ऐसा? Company is concerned about cost actually. जब हम लोग Yeah. चेंज की बात करते हैं तो दे विल लुक आउट फॉर बजट। हाँ, ये कॉस्ट largely आएगा, फिर रिवैम्प करो सारा कंटेंट या व्हाटएवर। largely इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगेन आप जैसे बात कर रहे थे। हाँ, सो या लार्जली कॉस्ट होता है, लेकिन समटाइम्स वो कल्चर को चेंज नहीं करना चाहते, वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए भी होता है। सो रेजिस्टेंस टू चेंज। फिफ्थ इज फियर ऑफ टेक्निकल चैलेंज। Now, sometimes implementing simulation training often involves dealing with technical issues. क्या टेक्निकल इश्यूज? भाई आप मशीन से डील कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से डील कर रहे हैं, तो उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, बग्स आ सकते हैं, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फेलियर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इस डर से भी कई बार जो है ऑर्गेनाइजेशन दे अवॉइड सिमुलेशन। ठीक है। So concerns about technical glitches or software compatibility issues may discourage adoption. Employees with limited tech skills may find simulation training intimidating also. डर लगता है। Imagine first time SBI employees being trained on using computer. हाँ, वो टाइम था, एक जमाना था, everybody was scared. This is one of the fear of technical challenge. Sixth is perceived lack of relevance. उनको रेलेवेंस ही नहीं लगता है, आपको लगता है, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए इफेक्टिवली। So Jugal says there is always room for error no matter how accurate the learning simulation is. Simulation is काफी लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स है। I'll just read that. There is always some scope for error and doubt when it comes to the recreation of real life scenarios. The biggest drawback of using simulation is maintenance and updates can be costly. Every technology gets outdated real quick. Yes, absolutely. The cost involved in updating the technology is never cheap.
and in order to keep them as relevant as possible, simulators require regular updates and maintenance. ठीक है? The more we lean on technology, the higher the need is to train people on to keep up and handle the technology. This training requires time and money and can be deterrent to use any type of simulator. बिल्कुल बात सही है. But while we are discussing, because of this question, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है. लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो प्रोएक्टिवली, यू नो, प्रोएक्टिवली और इसको बहुत डेडिकेटेडली इंप्लीमेंट भी करते हैं. Have you seen any organization? Have you come across any organization who does that? कभी देखा हो? Okay. If you are not able to think of such example, we'll move ahead. So where were we? हम कहाँ थे? We were discussing about the point perceived. Yeah, Bipin. No, I heard many times like aviation industries वगैरह में majorly देखा जाए तो उनको mandatory होता है कि वो लोग they go with simulations only. First training जो होता है उनका they will so yeah, and they will be बोलिए. हाँ, I was just putting up an example कि simulations को कहाँ mandatorily use किया जाता है. तो I think aviation industry is one prime area, and even our defense maybe. I think in defense also they use simulations. Correct. In that correct. Basically, all critical operations required simulation training, where they cannot tolerate the loss. Like medical professionals, they have to go with the simulation training. Where it's a matter of life and death of your customer, है ना? दोनों केसेस में, चाहे एविएशन हो चाहे मेडिकल हो, it's a matter of life and death. So you cannot go wrong, you cannot take risk, and that's why simulation becomes imperative for their business. For other businesses, it may not be imperative. Yeah. Welcome, Siddharth. Yes, Kushal. Yeah. So the sixth point was perceived lack of relevance. Some organization may question the applicability of simulation training to their industry or specific roles. And the reason could be the decision makers may believe that traditional training methods are sufficient. Na? चल रहा है काम. They may not see a direct correlation between simulation करवाना क्यों है और उससे जॉब परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी. तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे. जब तक रिलेट नहीं कर पाएंगे तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे. ठीक है. सो दिस इज 6th पॉइंट. 7th इज इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेनिफिट्स. ये सिर्फ मिलता जुलता है बेसिकली रेलेवेंस से. पहला वाला टॉक्स अबाउट रेलेवेंस, सेकंड वन टॉक्स अबाउट द बेनिफिट्स. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. The full range of benefits of simulation training may not be well understood by the decision makers sometimes. And the reason could be they are not aware कि simulation training कैसे critical skills को improve भी करती है, या decision making को affect करती है, या problem solving में helpful है. उनको शायद aware नहीं है, उन्होंने नहीं देखा पहले. आप नया चीज implement करने की कोशिश करो, पहले कभी हुआ नहीं. And the ROI of simulation training may not be clearly demonstrated. कई बार उनको लगता है यार खर्चा इतना है कौन करे, फिर आप उसको ROI निकाल के दिखाओगे कि ये सर इतना खर्चा करेंगे तो इतना आएगा, और वो लॉन्ग रन में निकल के आएगा ROI. तो कई बार जस्टिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से वो डायरेक्ट बेनिफिट्स नजर नहीं आते हैं, एंड दे मे डिनाई. एंड द लास्ट इज scalability concern. Now, scaling up the simulation training for a large workforce can be challenging. ठीक है. छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 कर भी लोगे. किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10, 20, 30,000 एम्प्लॉइज हैं, कैसे करेंगे? बहुत खर्चा है. यस और नो? इमेजिन रिटेल इंडस्ट्री. रिटेल इंडस्ट्री में जो काउंटर पे जो होते हैं, काउंटर संभालते हैं, कैश काउंटर,
उनको ट्रेन करने के लिए एक्चुअली आपको सिमुलेशन एक्सेस उस टूल की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे आप उनको पंचिंग कैसे करना है, बिलिंग कैसे करना है, वो सिखाते हैं। एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेटिकुलस, यू नो, बहुत ज्यादा मेटिकुलस होना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि आप एरर Data अफोर्ड नहीं quality. कर सकते, बिलिंग में एरर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड फॉर देम इट्स अ बिग चैलेंज। तो उसका जो सेटअप का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड समटाइम बिकॉज ऑफ दैट, जैसे अब छोटा रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन इन्वेस्ट। लेकिन अगर कोई अभी रिसेंटली उन्होंने इस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो दे मे नॉट इन्वेस्ट इन द बिगिनिंग, है ना। बड़े इंडस्ट्रीज कौन कौन से, जैसे रिलायंस रिटेल है, डी मार्ट है, यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर, क्रोमा है, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन दे कैन अफोर्ड। बट अगर थोड़ा छोटा लेवल है तो शायद नहीं भी करें। सो स्केलेबिलिटी कम्स, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट सी द नीड फॉर स्केलेबिलिटी। सो कंक्लूड करते हैं इसको। While simulation training has immense potential, we all realize that for enhancing learning outcomes, it is underutilized as well. And its underutilization in business organizations can be attributed to various justification and reasons. Addressing these challenges requires a strategic approach by the L&D team, and it involves clear communication of the benefits, investment in expertise, and commitment to integrating the simulation training into the overall training strategy. And as organizations become more aware of these advantages, and as technology advances, the adoption of simulation training may increase in future. लेकिन उसके लिए आपको as an L&D person अपनी organization में हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े, उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और ये सारी चीजों को कम्युनिकेट करने में। सो यू आर एक्चुअली सेलिंग दिस टू योर टॉप लीडर्स कि मेरे को ये करना है, क्यों करना है, ये बेनिफिट है। तो ये बहुत पापड़ बेलने पड़ता है इसके लिए। ठीक है, सो आई होप वी वर एबल टू फिगर आउट। या गाइस, Yes. Yes. Right. so Yes, taking yes, cues, taking yeah. cues from, And by the time we are able to convince them about these things, it's time to move on yeah, to change the organization. yeah, sometimes. Okay, so there's 5 minutes and 28 seconds remaining for this meeting to finish. So what I'll do is I'll quickly pause the recording. 1 second. Recording करते ना। Kaushal, in which session he has asked about, he has discussed about, we can also This listen to is that this is session last as to well. last set. Yeah. So this is, I guess, last to last session, because in last session we did a lot of activity, Okay. brush wala and all. Huh? Prior to that, he spoke about this. Correct, yeah. last Mhm. right. Yeah. So the question is, Okay, it is yeah. imperative. It is imperative that the contemporary training programs must include modules on sustainability issues, global warming, and climate change. So you need to comment that about that in detail in less than 800 words. तो मैं आप लोग से शुरू करूंगा before I share anything. What's your input? Should we not? And if we should, why? And how do you think you would really create that relevance in your participants' mind about it? Yeah, Tough definitely we should question. include this thing in all Tough. training programs. हाँ जी, tough question वैसे तो। Yeah. I just saw a movie screening in my organization about this sustainability topic. So they were the main thing which I still remember is that uh, they gave an example of these dairy farmers. So they said that dairy farmers are aware of one thing: carrying capacity of a pasture land. That this area of pasture land can sustain this many number of cows or buffaloes, whatever it is, whatever number of animals. So same is with the earth, Mother Earth.
that this many natural resources can sustain this many people. So if we exploit those natural resources uh, more than required or in excess, then definitely we are going to lose lives. Means Earth won't be able to sustain us for long. So this is the gist which I could understand from that. Maybe I have not been able to express it that well. So pardon me Kaushal, for I will that. share my perspective. Am I audible? Yes, 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 Sandeep. Yeah. So, since I'm in agrochemical sector, so in this sector, lot is talked about on the SDG, right? So I can give you an example. Yes, please. Suppose where paddy cultivation is done in the traditional method, so lot of water is used for this transplantation technique and all, and there is a process called puddling. So So, where sorry, the carbon I missed that. What was that? There is a process. नहीं समझ में आया. PUDDLIN. अच्छा, okay, okay, In paddy cultivation, got it, in got it, paddy got it. cultivation, it is called puddling. So which Puddling. releases methane gas in the atmosphere, right? So that is a cause of global warming. So many responsible companies like even Bayer, where I'm working, so we are trying to shift to a different method of cultivation of rice that is called DSR, direct seeded rice. Okay, so the main motive is that there is will be less use of water and this carbon footprint will be reduced. Absolutely. Okay, so globally there are about 20 such kind of various interventions on this SDG. So different companies are working on that. Like means reduce nowadays the ground water table is reducing, right? Means it is depleting. So how we can uh, avoid for deforestation? How we can do rain water harvesting? So these are some small steps which different companies are working on. Correct, correct, Right. correct, Yes. correct. So, guys, a brilliant example of this industry. We can, while we are creating our assignment, we can use this example of agro industry for this question. Very relevant, actually. So, I hope you all have taken a note of it. Just give me a moment. Yeah. Any other thoughts? So the clothing industry is required to take up the step for towards sustainability, because in future we need to save our earth no matter what. We are actually giving a lot of waste. We are polluting the water. We are bringing different, more waste is produced in clothing industries as well. And we are supposed to actually work towards it. If some new ideas on the table, we have to take care about the needs of the other, beings on the planet. The animals are there, their aquatic life ecosystem. So yeah, one can go with the clothing industry as well, and the makeup industry, cosmetic industries, those who are testing on the animals and all of these things. So we must head towards, inclusivity for all the species on Earth. Okay, I agree with you. Even I care for the environment, but then training and development का इसमें क्या role है? क्या relevance है? क्यों करना है हमें? Why? Why should a trainer or a L&D department should be concerned about training the employees on these issues? How will that benefit the organization or generate ROI? Is the question. Tough question, huh? Because in whichever industry we are, somewhere at some point we are exploiting natural resources, and that takes a toll on this sustainability. Correct. So, चलिए इसको deep dive करते हैं. So it is indeed, imperative that जो contemporary training programs जो हम traditionally करते हैं, इसमें हमें sustainability, global warming का issue लाना चाहिए. क्यों लाना चाहिए? इसके पीछे कुछ key factors हैं. जैसे कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, इस समय में क्या है कि
जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो विजिबली दिखने लगा है और दुनिया में इसके लिए अवेयरनेस बढ़ रही है. लाइक मानसी स्पोक अबाउट क्लोथिंग. इफ यू वुड हैव हर्ड ऑफ Atacama Desert, there is an कंट्री जहां पे ये है, वहां पे पूरी दुनिया से जो कपड़े हैं वहां पे जाके डंप किए जाते हैं. एंड दैट होल आइलैंड has turned into a huge desert of clothes. मतलब millions of tons, कभी आप उसको देखिएगा, millions and millions of tons are clothes are dumped over there. Because of that, the aquatic life is getting affected, the climate is getting affected, and the awareness towards this is increasing amongst people. Also, these Kaushal, can you climate please change. repeat which place you said? Sorry, Atacama. which place you said? Atacama Okay. Desert. Okay. Yeah. So, and also this global warming, this climate change is affecting us as a company also. For example, imagine you are in a business, supply chain के business में हैं आप, ठीक है, किसी भी supply chain के business में हैं. अगर तूफान आया, आंधी आई, तो क्या आपका बिजनेस हैम्पर नहीं होगा? क्या आपका सप्लाई चेन हैम्पर नहीं होगा? ट्रांसपोर्ट हैम्पर होगा? रॉ मटेरियल्स का जो अवेलेबिलिटी है वो हैम्पर होगा? अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी आ जाएगा, और अगर नेचुरल कैलामिटी आ गया और आपको इस तरह का शॉर्टेज हुआ या चैलेंज आया कि जहां पे आपको सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे एज एन एम्प्लॉई ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन? तो जाहिर सी बात है उस पर ट्रेनिंग की जरूरत है. कैसे हैंडल करेंगे? वी नीड टू क्रिएट वेज. सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, संदीप जी ने, ठीक है. वेरी नाइस. Example संदीप of जी, COVID. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस. बहुत बढ़िया एग्जांपल है. तो होल इंडस्ट्री शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाउ. एंड आई गेस इसके बारे में भी देश पांडे जी ने अपनी ट्रेनिंग में एग्जांपल ये वाला भी दिया था. एंड ये दो सिनेरियोस को लेके ही शायद इन्होंने ये क्वेश्चन असाइनमेंट में डाला है. सो लेट्स मूव ऑन. सो with the increasing recognition of profound impact of climate changes on business and societies, the role of organization in mitigating these impacts and the demand for responsible and sustainable practices from consumers, investors and employees becomes important. तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहला क्यों जरूरी है ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहला, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बिजनेस. क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस पे डेफिनेटली होगा. ट्रेडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड एड्रेस दिस इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज बिकॉज इट हैज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट implications फॉर बिजनेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज. और जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, रिसोर्स स्केर्सिटी and supply chain disruptions can significantly affect the operations and profitability of our business. Think about scenarios which happened recently. Hurricanes, came in. अभी recently कहाँ का? अभी मोरक्को में फॉर एग्जाम्पल अभी earthquake आया. अभी रिसेंटली बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज है, राइट? अभी हमारे हिमाचल में हुआ है ना लैंडस्लाइड. हाँ, हिमाचल में देखो कितना लैंडस्लाइड हुआ. यस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो दिस एक्चुअली डिसरप्टेड द होल सप्लाई चेन, causing shortage of materials and products. तो बेसिक नीड्स, दूध, चावल, है ना, खाना पीना. एंड द कंपनीज दैट हैड ट्रेन्ड देयर टीम्स टू असेस, कि पहले से उसको असेस कर ले और उसको मिटिगेट करने के रास्ते हम ढूंढ लें, तो उस रिस्क को हम या तो कम कर सकते, देखो खत्म तो नहीं कर सकते, उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं, है ना, अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड हो. बराबर है ना? सो यस, yes. so this, you can use these two examples. Second is corporate social responsibility and reputation management. देखिए आज के डेट में organizations are very particular about their brand image. So every organization mandatorily participates in CSR. बराबर है ना?
and they are increasingly expected to demonstrate their commitment to sustainability and responsibility practices because people look up to these organizations. उनका पहुंच, उनका रीचेबिलिटी, उनका जो कनेक्ट है कंज्यूमर के साथ वो बहुत ज्यादा है. तो सपोज मैं हूं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बहुत केयरफुल हैं अपने प्रोडक्ट चुनने में. उनका कुछ प्रोडक्ट फेवरेट है. क्यों फेवरेट है? बिकॉज दे थिंक अबाउट क्लाइमेट चेंज, they think about sustainability, and that's why this brand is my favorite. आपका भी कोई फेवरेट ब्रांड है? Is because they think about sustainability. Sorry, I lost connection in between. Am I audible, guys? Yeah. Now you are audible. Yeah, now it's audible. Yeah. So, corporate social responsibility. Organizations are increasingly expected to demonstrate their commitment towards sustainability. So examples आपको दे सकता हूं मैं यहाँ पे. पैटागोनिया का नाम सुना है? यूनिलीवर का नाम तो सुना ही है. यूनिलीवर, they are known for their sustainability. They include sustainability training in their onboarding process. They emphasize values and practices aligned with environmental responsibility. A lot of hygiene product manufacturing companies, right, for women, they are talking about sustainability and biodegradable products and things like that. And just because of that, उस तरह से उसको मार्केट कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं. So जाहिर सी बात है, इसको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा. ठीक है. So this is second one. Third, regulatory compliance. तो अगर आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ, गवर्नमेंट डंडा करके करवाएगी आपसे, जैसे कि अभी नितिन गडकरी साहब करवा रहे हैं. डीजल गाड़ियों पे शायद अगले महीने से 2% और टैक्स बढ़ जाएगा. ठीक है, बनाओ डीजल गाड़ी बनाओ, और तो झक मार के आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा आपको. So sometimes if the organizations are not doing it, they're really not bothered about sustainability, government will put a pressure on you. They'll put a regulatory compliance on you. So governments and regulatory bodies. Kaushal, in one of the meetings, Nitin Gadkari was saying the same thing, that he's going to get some law or rules that every government official should use, they should not use petrol or diesel vehicles. They have to switch into alternate ones. And so he was mentioning about ethanol, methanol, something like that. Yes, absolutely. In fact, he himself, जो गाड़ी वो ड्राइव करते हैं, टोयोटा की कोई गाड़ी है, I'm forgetting the name, वो हाइड्रोजन ऑपरेटेड गाड़ी है, and that is the only car in the entire India जो हाइड्रोजन ऑपरेटेड है, and he travels in that vehicle, just to create an lead by example. So you can use this example in your assignment. आप देखो BS4 आया था इंडिया में, BS4 के बाद सीधा BX6 आया, BS5 नहीं आया. तो we took a leap when it came to emission norms. It's a very good example of regulatory compliance. So you'll have to do it. आपको सिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी गाड़ी की कैटेलिस्ट. Even in medical therapy, like I'm working in Freshness Kavi, so we are also developing a biosimilar products for onco patients that will help to reduce the biological hazards on the environment. Okay. Yes. So nice example. Thank you. Let's move on. तो ये आप एग्जांपल्स उसमें से ले सकते हैं कि रेगुलेटरी कंप्लायंस, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज वर्ल्ड वाइड आर इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस. Organization must ensure that their employees are aware of these regulations and are trained to comply with them. Fourth point, talent attraction and retention. Many employees, especially younger generation, they prioritize working for organizations that share their values and contribute positively to environment and social cause. अब एक फैशन भी बन गया है, and people deliberately या consciously उन कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं
जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं. So many companies, just to attract more talent and retention, they use this. So a survey by Deloitte, I'm sharing an example with you. Deloitte ने एक सर्वे किया था जिसमें 76% of the millennials consider a company's social and environmental commitments when choosing where to work. ये Deloitte का research है. So that's why it's imperative that we include sustainability in our trainings. Okay, so next point, business resilience. Fifth point. Sustainability training can help organizations build resilience. Resilience मतलब मजबूत. किसी भी तरह का झटका, किसी भी तरह का जो होता है टर्बुलेंस को अब्सॉर्ब कर लेना, बाउंस बैक कर लेना, है ना. So business resilience create करने के लिए sustainability training can help organizations build resilience against environmental challenges. It equips employees with the knowledge and skills needed to adapt to changing conditions, reduce waste, and innovate for sustainability. Example आपको यहाँ पे एक दे सकता हूँ मैं, IBM का. तो IBM ने काफी सारे सस्टेनेबिलिटी ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट किए अपने एम्प्लॉइज के लिए, जहां पे वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करने लगे. They trained their employees to think about sustainability, and come up with creative ideas to develop products. Sixth point, this is the last one, and this is innovation and competitive advantage. Innovation and competitive advantage. ये भी फिफ्थ पॉइंट से ऑलमोस्ट रिलेटेड जैसा ही है. जो प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है वो इनोवेशन को सिमुलेट करता है ऑटोमेटिकली बाय एनकरेजिंग द एम्प्लॉइज टू थिंक क्रिएटिवली. Example, best example right now is Tesla. Think about Tesla. Tesla's success is partially attributed to its commitment to sustainability, अगर देखा जाए तो. Yes or no? So Tesla's success is partially attributed to its commitment towards sustainability and training employees to develop cutting-edge electric vehicles and energy solutions. उनका सारा फोकस अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने में लगाया उन्होंने कि भैया आप बैठ के सोचो, इनोवेटिव आइडिया सोचो, कैसे हम कटिंग एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो कि इंडस्ट्री लीडिंग हो. ये वो कुछ एग्जांपल्स है जिसकी वजह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट. सो कंक्लूड करते हैं इसको. अगर हम सस्टेनेबिलिटी इशू से रिलेटेड मॉड्यूल्स इंक्लूड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपने सेशंस में, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात करते हैं अपने ट्रेडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ये एसेंशियल पार्ट बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बहुत तेजी से इस बदलते परिवेश में that seek to thrive rapidly in changing environment, in changing world. And these modules not only prepare employees to address climate change or climate related challenge, but also align to the organization with societal expectations, regulatory requirements. यही जो 6 पॉइंट हमने बात की. So by doing so, any organization can contribute to more sustainable and resilient future. ठीक है. और अपना खुद भी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो रेपुटेशन है, ब्रांड इमेज है, उसको भी वो इंप्रूव कर लेते हैं. ठीक है ना. सो दैट इज इट. आई थिंक दैट्स ऑल.